देखिए ये तो टाइम ही बताएगा। अभी तक हमने पिच कल ही देखा था, उस पर थोड़ा सा घास रखा हुआ था। तो अभी आज पता नहीं पिच कैसे क्या किया हुआ है क्यूरेटर ने पिच के ऊपर, बट आई डोंट नो, इट्स वेरी हार्ड टू से एट द मोमेंट कि ये स्पिन डोमिनेटेड टूर्नामेंट होगा या फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करेंगे। बट आई थिंक सारी टीमों के पास फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स अच्छे हैं, तो अगर क्वालिटी टीम में है तो विकेट्स फास्ट बॉलर्स भी लेंगे, स्पिनर्स भी लेंगे। तो अभी ये तो देखना पड़ेगा, टाइम बताएगा कि पिच कैसी है, पिच कैसी खेल रही है टीम, क्या कॉम्बिनेशन खिला रही है, कितने स्पिनर्स खिला रहे हैं, कितने फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं। हाँ, और बिल्कुल दोनों टीम में से आई मीन शाइन उन पाकिस्तान की टीम से नहीं है, हमारे टीम से बुमराह नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्वालिटी जो दोनों लेके आते हैं अपनी अपनी टीमों के लिए, वो ऑब्वियसली मिस होगा दोनों टीम के लिए। बट मेरा ये मानना है कि जो बाकी लड़के हैं दोनों टीम में, उनकी भी टीम में हमारी भी टीम में, किसी और को मौका मिलेगा उस जगह पे खेलने का, तो आई होप कि वो जो भी मौका जिसको भी मिलता है वो मौका अपना अच्छा यूटिलाइज करेंगे। I mean, look, the mood in the camp is obviously buzzing. It's a fresh tournament, a new start, and that is something that we always talk about. When you start fresh, you need to start fresh, not to think about what has really happened in the past. And that's how teams move forward, and we are no different. We also move. We also want to move in the same direction. Um of course, it'll be challenging to play against Pakistan without a doubt. But for us, what is important is what we are thinking as a group and what we want to achieve from this tournament. And taking one game at a time and all those kind of things will play a huge role. So we will focus on that rather than thinking about the opposition. For us, it is important we are here for a purpose, and we want to achieve something from this tournament, and we'll be focusing on that. And yeah, I mean, like I said, everyone's quite excited to be here, and they want to, start the tournament on a high. So yeah, everyone's looking forward to it. So far, I mean, we've not decided the playing 11. We want to see the pitch. We want to see today's game as well, because the game will be played on the same pitch tomorrow. That's what we were told. So yeah, we want to make the decision based on that. Yeah. Yeah, and see, whoever, all 15 are here, whichever 15 are here, they're pretty much in the mix of everything. And that's why they're here, because they've produced results, they have performed whenever they've gotten an opportunity. So everyone stands a chance to represent. We are not somebody who will close doors on individuals, and we don't want to do that. We want to, see how individuals respond to certain situation that has been put by the team management to them, and we will see how they respond to that. So far, whatever we were expecting from the individuals, I think they have responded pretty well. So yeah, going forward, it's a big headache for us, leaving out certain players from the squad, from the playing 11. It's not easy, but as far as the team goes, we got to get the best combination and best playing 11. So whatever it takes for us to do that, we will do everything we can to get the best possible 11 all the time. And yeah, like you said about Dinesh, yes, of course, off late he's come out really well, and we know his quality. Even before he was dropped from the team, he played some crucial knocks for us. So keeping that in mind, what kind of role he plays for us, he was brought back into the team. And yeah, so far he's not disappointed us. Yeah, I mean, yesterday when we went to the ground, we spoke to the curator that the toss shouldn't be a factor, because we want to see the quality cricket in both innings. And he'll do everything he can to make sure the best cricket is displayed for all of us. So far we've heard there hasn't been any dew till yesterday. But again, we got to see the game today. Luckily for us, we are playing tomorrow, so we have a chance to see the game today and see what the conditions will be like. It is pretty simple for us to assess that condition. We will be in constant touch with the groundsman to see whether there was any dew or not.
But even if the dew plays a factor, we've played enough cricket here now in the last few years to understand what we need to do as a group, as a team, and as individuals as well. So I think either way, we should be prepared to counter whatever is in front of us. Of course, I mean, the second part of your question, we do talk about our losses. There's no doubt. I mean, that's how we want to improve as a team. What we didn't do right, what we did right. And of course, that, loss did hurt us at that point. But I think it's been a while since that game has been played. So for us, we've got another challenge in front of us now, and there's no point thinking about that loss at the moment. We need to think what we didn't do as a team, particularly on that night. And since then, we've played a lot of games. We've tried to correct those mistakes in the games that we played after that. And yeah, I mean, for us as a team, that is important. You learn from your mistakes, and we keep talking about it. So for us now, it's a fresh start. We know, and obviously the team is coming out of playing a lot of T20 cricket. So we know now as a team what we need to do to win games. Oppositions will challenge you every now and then. You just need to find ways to counter that and to respond to that challenges. So for us, it'll be the same, and we will not think too much about what happened in October. That was a long time back. But yeah, the losses obviously hurts a lot. But I think we moved down from that loss. We played, like I said, we played a lot of games, and there's a fresh, important tournament coming for us. So we need to try and keep our focus, here right now. No, we do talk about these kind of things a lot. Off late, since COVID has struck, it's been difficult for a lot of players, not just Virat himself, but for a lot of players who've gone through such a hard time mentally, staying in the bubbles and not being able to go outside your hotel. Some of those guys find it difficult, and there's nothing wrong in it, because how you led your life up until then was completely different till you were stuck in COVID and you had to stay inside the bubble and stay inside the hotel room for 2 months when we did long tours, the quarantines and all of that. It was not easy. So every player has a way to respond to that, and I don't think there is anything wrong if player has his view on that. And of course, there is a constant talk about that in our group about mentally keep them fresh, because at the end of the day, that freshness is very, very important. Especially when you're playing high pressure games, and mentally you need to be fresh. That's the most important thing. Otherwise, you won't be able to compete. So I think the mental health is very, very important. I think देखिए ये सवाल हर कैप्टन को पूछा जाता है एशिया कप, वर्ल्ड कप, कि इंडिया पाकिस्तान का गेम है तो आप क्या सोच रहे हो. फैंस आपको मिल रहे, पाकिस्तान फैंस आप इंडियन प्लेयर्स को मिल रहे, इंडियन फैंस पाकिस्तान प्लेयर्स को मिल रहे. आई थिंक ये बाहर मतलब आप लोगों के लिए अनयूजुअल होगा, हमारे लिए अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि हम हमेशा इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं ये चीज़. और जब भी हम ग्राउंड पे जाते हैं, फैंस, क्रिकेट के फैंस जितने भी है आते हैं गेम देखने के लिए. उनको गेम देखना है, एट द सेम टाइम उनको प्लेयर्स को मिलना है, प्लेयर्स को देखना है. तो ये बहुत से लड़कों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है. टीम में हमारे कुछ नए लड़के हैं, उन्होंने शायद नहीं किया होगा, बट उनके लिए हो सकता है ये अनयूजुअल हो. बट बहुत से लोगों के लिए अनयूजुअल नहीं है ये, क्योंकि हम ये हमेशा देखते आ रहे हैं. और ये मिलना जुलना जो होता है ये नॉर्मल है. और ये हर टूर्नामेंट में, हर मैचेस के पहले टीम साथ में प्रैक्टिस करती है, तो ये मिलना जुलना होता रहता है. और जहाँ तक राइवलरी की सवाल है, दोनों अच्छे टीम है, आप आमने सामने खेलेंगे, अच्छा क्वालिटी मैच तो होगा ही, और उसके बारे में चर्चा होगी. बट आई एम श्योर कि दोनों टीम के लिए ये एक जस्ट मैच है जो दोनों टीम कोशिश करेगी जीतने के लिए. तो हमारे लिए भी, हमारा फोकस भी यही है कि
बाहर से हाइप आप लोग बनाइए, बट अंदर से हम हमारा काम करेंगे, फोकस करेंगे गेम के ऊपर और अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। आप देख लीजिए कल टॉस के बाद कौन आएगा, ये तो थोड़ा तो सीक्रेट हमको भी रखने दो यार। देखिए हमारे टीम ने डिसाइड किया हुआ है, हमने डिसाइड किया हुआ है, हम लोग चीज़ें ट्राई करेंगे। कुछ चीज़ें वर्क करेगी, कुछ चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, बट ट्राई करने में कोई हद नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ट्राई करना है, ट्राई करने के बाद ही आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो हमें जब ट्राई करने का मौका मिलता है तो हम बिल्कुल ट्राई करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ चीज़ें। बट जहाँ तक कॉम्बिनेशन का सवाल है, आई मीन जैसे मैंने अभी बताया कि वो आपको कल ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। बट हमारी टीम ने डिसाइड किया हुआ है कि हम चीज़ें ट्राई करते रहेंगे और उस ट्राई करते समय वो करते समय अगर कुछ मुश्किलें आई तो भी हमको उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हमें ट्राई करना है। हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम कुछ चीज़ें ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारे ग्रुप में भी ये चीज़ की बात हुई है। और हमें उस चीज़ से डरना नहीं है। जब हम ट्राई करने की कोशिश करें उस चीज़ से डरना नहीं है। हम कोशिश करते रहेंगे, नई नई चीज़ें ढूंढना, नए नए आंसर्स ढूंढना। वो कई चीज़ों से हो सकती है, बैटिंग कॉम्बिनेशन से हो सकती है, आपके बॉलिंग कॉम्बिनेशन से हो सकती है। तो हमें पूरा कोशिश करना है उस चीज़ों को ट्राई करने के लिए। नहीं देखिए, आई मीन वो कॉम्बिनेशन जो है हमारे बैटिंग कोच डिसाइड करते हैं कि कौन से नेट में बैटिंग करेगा। बट जहाँ तक उनका विराट का सवाल है कि वो किस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, किस फॉर्म में लग रहे हैं, आई थिंक सामने से जो मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छे टच में दिख रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने बैटिंग को लेकर, और ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। एकदम जो पहले हम देखते थे उनको वैसे ही है। कोई ज़्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चेंजेस मुझे तो ऐसा दिखने को नहीं मिला है। ऑब्वियसली 1 महीने के ब्रेक के बाद आ रहे हैं तो वो फ्रेशनेस जो है, जो ज़रूरी है हर एक प्लेयर में, वो देखने को मिल रही है। तो आई थिंक अच्छे टच में लग रहे हैं। अभी देखिए एज ए टीम हम कोशिश यही करते हैं कि सारे लड़कों को मौका दें प्रिपेयर अच्छा करने का, क्योंकि हमारे लिए प्रिपरेशन की है और जिस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं उस तरीके से हम जाके खेलते हैं ग्राउंड पर। तो आई थिंक प्रिपरेशन वाइज हमारी अभी तक कोई कमी रही नहीं है। हमें 3 दिन मिले थे अच्छे प्रैक्टिस करने के लिए। आज भी एक प्रैक्टिस सेशन है, बट ऑप्शनल है, शायद पता नहीं कोई आए ना आए। बट सो फार ये 3 दिन में तो हमें काफ़ी कुछ देखने मिला और काफ़ी खुश हूँ उस चीज़ को देखकर।